frequency sound waves to locate fish Upper. in the sea. Figure 8.1 shows the sound waves emitted from the boat. फिर नीचे करते हैं. State the name of the sound wave which have frequency Sound greater wave is than emitted 20 from the board, hertz. and then कौन सा साउंड होता है whose frequency is greater than 20,000 hertz? The sound whose frequency is greater than बताया था 20,000 हमने. hertz is called जी मैंने तो बताया था आपने बताना है जी. अल्ट्रासाउंड ultrasound. Next is high frequency sound waves travel from the boat through the sea water. The speed of the sound in the water is 1500. The seabed is 22 meter below the boat, and this is the speed of the sound, and this is the depth of the sea. Okay, calculate the time taken for the boat to receive the reflected wave. It's not an incident wave, reflected wave. So, ये important. So initially, the first the wave have to strike on the seabed, and then it will be reflected. Let's suppose the total distance is d. So the total distance covered by the ultrasound wave is कितना distance हो जाएगा? The total distance is d जाते वक्त और d वापस आते वक्त. So the total distance is plus d. D plus d equals Vt. So the total distance is 2d equals Vt. So distance equals Vt. Okay, ऐसे रखते हैं. 2d over V. V will be shifted. So 2d over V equals t. So the time equals to the distance is 22 meter, and the speed is कितनी थी speed 1500. चेक करें मुझे टाइम क्या आता है 2 multiplied by 22 becomes 44 divided by 1500. 0.0293. 0.029. So for two significant figure, the answer is 0.029 for two significant figures, and the unit is second. Next is figure 8.2 shows a fish below the boat. Describe and explain how the reflected sound wave received by the boat from the fish differs from the reflected sound wave received from the seabed. जी बच्चों एक साउंड हिट कर बच्चे बेड पे जाके हिट कर रहा है and the second sound wave strike on the fish. कहते हैं what's the difference between reflected wave? क्या डिफरेंस होगा? जी बच्चे सर एक ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा और एक कम. हाँ किससे ज़्यादा हो सी बेड से या उससे? देखें इसमें हम लिखते हैं द रिफ्लेक्टेड वेव wave
from from fish is reflected wave from fish sir क्यों weaker होगी क्योंकि उसका size कम है size of the fish sir तो small amount of are reflected wave from fish sir only small part only small part of wave only small part of reflect from fish from small part of wave reflect from fish and most of the sound waves and most of the sound waves and most of the sound waves goes towards the seabed. Birds, thus the reflected wave has smaller amplitude wave from fish has smaller amplitude. Or the size of fish is very small as so very less amount of the wave. Yeah, क्या लिखा है? The reflected wave from fish is weaker because only small part of wave reflect from fish से बहुत ही थोड़ी सी wave reflect हो and most of the sound wave goes towards the seabed और ज़्यादातर sound कहाँ पे चला जाएगा bed की तरफ. Thus the reflected wave from fish has smaller amplitude. Reflected wave from fish has smaller amplitude. Any confusion? No. Next question number 4. पढ़ें? जी. A loudspeaker produces a sound wave in air. The distance between the center of a compression and the center of a neighboring diffraction is 0.10 meters. Calculate the wavelength of the sound wave. Okay. कहते हैं कि distance between center of compression. Sound is a longitudinal wave that form of compression, rarefaction. Then compression, then rarefaction. Then rarefaction. So compression, rarefaction. Compression and rarefaction. अब बचे the center of compression and the center of rarefaction is कहते हैं कि compression से यहाँ तक का जो distance that is 0.10. Distance from center of compression, center of rarefaction, neighboring rarefaction is और आपको अगर याद हो the wavelength is compression या the distance between rarefaction is lambda. ये है ना lambda ठीक है तो half of that is lambda by 2 कहते हैं lambda जो होगा double of 0.1 equals equals 0.1 multiply by lambda equals 0.2. 0.1 multiply by 2 0.2
तो दिस इज द वेवलेंथ। तो आप याद रखें वेवलेंथ का क्या होता है। लेंथ दी consecutive consecutive compression or rarefaction between consecutive compression और rarefaction wavelength क्या होगा। तो द डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड rarefaction is lambda by 2। के लिए हमने 2 से confusion। No. Next is state the typical value of speed of sound, which is speed of sound in air जो होता है, its range is 30 50 meter per second। This is the range of the sound। तो आप हम लिख देते हैं meters per second 340 मीटर per second। ये अपने रेंज। तो रेंज में देखें ना 330 Okay. टू 350 है। तो आप इसके इन बिटवीन। नेक्स्ट कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड फ्रॉम द लाउड स्पीकर। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है v बाय। तो स्पीड इज 40 हमने ली है एंड लैम्डा इज 0.2। द आंसर इज 1700. 1700 हर्ट्ज। कैलकुलेट भी करती हैं कि बस आंसर दे बता देती हैं। नहीं सर, कैलकुलेट किया। 1700 hertz। Next is explain whether the sound from loudspeaker is audible to human normal hearing. Is it audible or not? Yes. Because the range for human is 20 hertz से 20,000. 20,000 hertz। And this In is between 7 है। हाँ जी देखेंगे। second. Yes। Why yes? Because it was it in audible की spelling क्या audible frequency range। 2 मिनट रुको। हाँ ये करिए जरा सी आवाज क्या करना है। हाँ और लगी है। नेक्स्ट इज another loudspeaker। आवाज आ रही है आपको। जी अब पहले से कुछ loudness वैसे ही है। सर, सेम ही है। Same ही है। Another loudspeaker produces a sound of wavelength 0.40 meter। Sound from the loudspeaker reaches a sound absorbing surface with a gap of width, the gap of the width at the center. Figure 5.1 shows the arrangement. So we know that the condition of diffraction is for diffraction. Sir, same distance and same gap. The wavelength, uh, the wavelength must be greater than or equals to the gap width. Almost must be almost same. Now अब बचे देखें वेवलेंथ कितनी है।
In this question, the wavelength is 0. The gap size is 0.8. है ना? Size of the gap is larger as compared to the wavelength. Explain. तो कहते हैं explain possible whether it is possible to detect sound from loudspeaker at either point J or at K. J पे या K पे आपको सुनाई देगा कि नहीं? देखिए यहाँ पे अब जो डायफ्रैक्शन होगी बिकॉज द गैप साइज इज वाइडर एज कम wavelength, there will be very little diffraction happens just around their edges. सिर्फ edges के पास क्या होगी? डायफ्रैक्शन. सिर्फ edges के पास diffraction. तरह से. So there will be very little diffraction just around their corner. तो K पे तो आपको थोड़ा बहुत साउंड सुनाई, लेकिन there will be sound at J because there will be very less diffraction. J पे कहेंगे J पे वालेकुम अस्सलाम सर। सर सॉरी कि लेट आया हूँ, वो ना दोस्त के साथ गया हुआ था तो सॉरी। हाँ? मदर को कर दूंगा मैं. तो वो मम्मा ने ही याद कराया आकर के क्लास भी है आपका। Okay. Explain ओके। whether it is possible to detect sound from the loudspeaker at either point J or at point K. अब्दुल्ला आज हम ये अल्ट्रासाउंड के क्वेश्चन ओके, वेव्स की? वेव्स के. तो पॉइंट J पे क्या होगा? नो साउंड डिटेक्टेड. यहाँ पे हम लिखें नो साउंड डिटेक्टेड because it is too far from the it is far far from क्या कह सकते हैं डायफ्रैक्टेड पैच. far from डायफ्रैक्टेड पैच. पॉइंट K और पॉइंट के जो है इट इज नियर टू द डिफ्रैक्शन पैटर्न. तो आपको यहाँ पे साउंड सुनाई देगा. साउंड डिटेक्टेड कह सकते हैं साउंड डिटेक्टेड ड्यू टू डिफ्रैक्शन एट द साउंड डिटेक्टेड ड्यू टू डिफ्रैक्शन एट द टू डिफ्रैक्शन near the cape. जी। The question is question number 5. Give the हाँ जी सर। Question number 5 is sound wave travels through air. Figure 6.1 shows a pressure time graph with the air at one place. On figure 6.1, label 1 point C to indicate a compression, 1 point R to indicate a rarefaction. so आपने शो करना है compression. तो if you remember sound waves are सर longitudinal. जहाँ प्रेशर मैक्सिमम है वहाँ कंप्रेशन है, जहाँ मिनिमम है तो वहाँ रिफ्लेक्शन। Very good. रिफ्लेक्शन। तो compression air fraction pressure इस तरह से हम. So pressure is maximum compression and pressure is minimum in of air fraction. तो यहाँ पे हम कहेंगे at this point. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ this is compression, pressure is maximum, compression and oh
ये नीचे वाला तो प्रेशर कम नहीं होगा, नेगेटिव प्रेशर, इट्स अ जीरो। और यहाँ पे दिस वन इज द रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन। जी तो यहाँ पे प्रेशर जो है कम हो गया, प्रेशर इज तो प्रेशर इज मैक्सिमम of rare compression, pressure is minimum at rarefaction. So explain why this graph cannot be used to find the wavelength of the sound wave. Why this graph is not used to find the wave. so since it's a pressure time graph. Then सर किसी इस बात तो सही पूछ रहे हैं, क्यों नहीं है? हाँ जी, क्यों नहीं है? Because uh, this graph, in this graph, pressure is varies with time, not the displacement varies with displacement होता ना, तो हम कह देते कि एम्पलीट्यूड होता, कहते कि ट्रस्ट और ट्रफ में ना, if along y-axis amplitude और displacement, फिर हम कहते हैं कि this one is the wavelength we have, but here along y-axis we have pressure, so that's why it is not useful to find the wavelength. The graph shows the variation with time. Graph of shows variation with time, not with displacement. The graph shows variation with not with अगर डिस्प्लेसमेंट होता ना, फिर हम कह सकते थे कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के दरमियान फाइंड कर सकते। नेक्स्ट इज द साउंड बिकम्स लाउडर, लोअर पिच। लाउडर का मतलब क्या होता है? लाउडनेस। लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड। लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड, ये बोला। Which depend upon फ्रीक्वेंसी। frequency of the sound. जी Now Now, the the amplitude of the amplitude of the sound यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? The sound sound becomes louder. Louder होने का मतलब amplitude increases. Those sounds becomes louder. And the frequency pitch decreases. Lower pitch mean lower frequency. So frequency increases. Confusion? नो सर। मायदा मायदा आपको? No, sir. Next is sound of frequency. 13 kilohertz is transmitted through water. The speed of the sound in water is 1500 meter per second. Calculate the wavelength. Equals E equals F lambda. Lambda equals V by F. Speed is 1500. Frequency is 13,000 hertz. Kilo. Because it's kilo. Answer check करें मायदा. Answer check करें मायदा. Okay, sir. Sir, 0.115. Okay. 0.115. आगे कुछ है? 0.115. तो इसको हम लिख देते हैं 0.12. Okay. 0.2. Next is state the approximate speed of sound in air. Tula. सर 380।
The range is the range is 330 to 350. ओह 350 सिर्फ 380 किसका था फिर? Here ओह कभी नहीं था. नेक्स्ट इज, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 40%. मैं रिपीट कर देता हूँ. एयर के लिए आपने फ्रॉम लिक्विड तक याद रखना. लिक्विड में इस अप्रोक्सीमेट वैल्यू अराउंड 50. सॉलिड में 1000 या 5000 होता है. ठीक. सर कुछ नहीं. नेक्स्ट आ जाता है साउंड वेव्स. नेक्स्ट आ जाता है साउंड वेव्स हैव कंप्रेशन एंड रेयर. Explain what is meant by compression, what is meant by rarefaction. Compression क्या होता है बच्चे? Where the सर particle हाँ जी, where the particles are close together. and have greater pressure. तो हम लिखेंगे particles are closer than where particles are closer than normal than normal. Region where particles are closer than normal and have have greater pressure. The region where particles are closer than normal have greater pressure. और rarefaction में क्या हो जाएगा? The region where particles are further apart where particles are further apart Apart. and have low pressure and have Pressure. low pressure. No sir. Confusion. Light from next. We can see light from sun, but we can't hear any sound from it. State the reason from this. जैसे sun से सर light तो आती है लेकिन sound नहीं आता. मायदा बताएगी. वेवलेंथ का डिफरेंस कब बताएंगे फिर? मायदा जी आप बताएं. We can see the light from sun, but we can't hear that produces during fusion reaction. सर स्पीड के बारे में तो नहीं बताएंगे ना? हाँ थोड़ा थोड़ा सर क्यों? लेकिन सर इन दी एंड साउंड का भी स्पीड पहुंच ही जाएगा ना? हाँ मायदा आवाज आ रही है आपको? जी सर. मायदा को बताना चाहिए कि हमने रिसेंटली चैप्टर पढ़ा था. जी. वो एक्सपेरिमेंट याद है बेल वाला? जी. कौन सा एक्सपेरिमेंट? सर क्योंकि साउंड वेव्स को उनको एक मीडियम चाहिए होता है जैसे कि एयर और वाटर टू ट्रैवल, लेकिन जो है स्पेस या हाँ जी ऊपर वो वैक्यूम है. जी वेरी गुड. सर वो क्यों वैसे साउंड क्यों नहीं चाहिए होता? Sound needs a medium for their motion, but क्यों? light doesn't need for their motion. इसमें हमने एक एक्टिविटी नहीं, एक बेल जा रहा है उसमें एयर होती है. when you the sound सुनाई देगा. when you remove the air the help of vacuum pump sound the loudness of sound become. सर वैसे इसका वजह क्या है? तो sound need medium for their motion. नहीं सर उसका वजह क्या है meant? साउंड में क्या होता है? एनी डिस्टरबेंस जो पार्टिकल्स है ना वो एनर्जी को ट्रांसफर कर. The particle carries sound energy from one point to another. Whereas the light are electromagnetic waves. They have electric and magnetic fields जो एक दूसरे को जनरेट करती रहती. जी.
अच्छा, जैसे अगर आपने सोचो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, जी मैग्नेटिक का मतलब होता है मैग्नेट. इट मींस फॉर एग्जांपल wave has two components. One is electric and the second one is magnetic. Light having two components. और ये दोनों एक दूसरे को जनरेट कर रहे होते हैं. इलेक्ट्रिक जनरेट्स मैग्नेटिक, मैग्नेटिक अगेन जनरेट्स इलेक्ट्रिक, एक दूसरे को प्रोड्यूस करते करते आगे आ जाते हैं. बट इन केस ऑफ साउंड, साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर देयर मोशन. एंड पार्टिकल कैरीज द साउंड एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो इसमें हम लिखते हैं साउंड, साउंड needs medium to travel, medium to travel, and sound needs medium to travel, and there is no medium between the earth and ऐसे लिख देते हैं. And in vacuum and in vacuum there is, ठीक है. जी Next is during a thunderstorm, an observer sees the lightning almost immediately. The lightning आपको जल्दी नजर आती है, but hear the sound of thunder several seconds later. The thunder and the lightning are produced at the same time. कहते हैं lightning जो हुई है वो आपको same time पे ही बस मतलब sound भी generate same time पे हुआ है. Let's suppose यहाँ पर observer है जो lightning को observe कर time पे तो same time light पहले receive. The speed of light is 3 × 10⁻⁸ and the speed of sound is very low as compared to light 340. Calculate the distance. अच्छा और पूछा. The thunder and the lightning are produced at the same time. The sound of the thunder is heard after the lightning is seen. Speed of sound in air is 40 meter per second. Calculate the distance from the thunderstorm to the observer. Distance very simple, equals distance over time. Distance equals speed into time. Speed is time is 340. Time is 9. 3060 meters per meters. 3006. That is 3100. 100. Strike in a lightning strike there is a current of this much 10⁻⁴, where for this much time is 48 milli. It's not meter, milli power by the electricity. ये भी आपको समझ आएगा कि हमने इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन नहीं किया. ये अब्दुल्ला आपको बताएगा कि Q I करंट is का equal to फॉर्मूला क्या IT. होता है. Q is equal to क्या होता है? IT. Q equals IT. Good. I equals Q over T. जी. Charge. So we need charge. So I is the 3 current. multiplied 10 to the power 4. 10⁻⁴ and 48 10⁻³ मतलब जी सर मैं कैलकुलेट करूँ. Sir 1440. 14 1440. 1440. तो हम
14, it is 1400. And the unit of charge, Abdullah, unit of charge is Columns. Ah. capital. Next is State the name name of reflection of sound or ultrasound wave. Important. काफी देर state the name of reflection of sound wave. मतलब जो sound wave reflect होके आती हैं Echo. तो echo is basically the repetition of sound due to reflection of sound. Next question number 5.1. जी मायदा पढ़े. G. Figure 5.1 shows an ultrasound wave being used to scan an internal organ of the human body. The ultrasound wave has a frequency of 2.0 megahertz and passes through human tissue at a speed of 1500 meters per second. Speed and Calculate the frequencies. So speed and frequencies are given and you have to find the wavelength. क्या होता है? मायदा formula क्या होता है? Have to find the wavelength. So V is equal to F lambda. F lambda equals by F V 1500 and F 10 powers hertz. 0.00075 meters. 2 point. How many zeros? 0 point 0.0000375. 3075. So this is 7.5 10 raised to power minus 4 meters. C part is figure 5.2 shows crust of wave from a point source S approaching a barrier. So this is the point source barrier on figure and label one wavelength. One wavelength क्या होता है अब्दुल्ला? So one question trough. So in this picture the wavelength is So इस पे बन रहा है से हैं जो तुम सा नहीं सर सर the distance दोनों का distance दोनों lines जो लगाए हुए उनके distance very good. So the distance between the two wave fronts अब्दुल्ला हमने में आए थे जी सर the distance between the two wave fronts are called the wave. जी Next draw crust three crust of wave reflected from the barrier. अब आपने रिफ्लेक्शन शो कर मुझे रिफ्लेक्शन में ना आपने को ही कंटिन्यू opposite direction. First wave, second एक second wave, बता देते हैं and third wave. ऐसे Third wave हम इधर बना देते तो and the wavelength is next is जी a wavelength lambda longitude. Next is sound waves are longitudinal wave. अच्छा इसमें आपने important क्या किया आपने the distance between wavefront must be same. ये तो and you have to measure the distance. So this is 1 centimeter. 1 centimeter के dot लगा के sound waves are longitudinal. Next is sound waves are longitudinal and electromagnetic are transverse wave. Sound waves are longitudinal and electromagnetic waves are transverse. A sound wave used for medical examination has a frequency of this. State and
What type of state and explain what type of sound wave this is? Is mega mean millions 10 power 6 power. This is 1.5 10 power 6 hertz ultrasound. तो ultrasound हो गया ना? Ultrasound. So this is the ultrasound frequency. Why? Because its frequency is greater than its because its frequency 20,000 hertz. Then the wave travel through soft humor 20,000 hertz, 1.7 hertz. The wave travel through soft human tissue at a speed of 1.3 kilometer per second. Calculate the wavelength of the wave in the soft tissue. So you have to find the wavelength. Lambda equals E by F. V is the sound divided by the 1.3 mean 10 power 3 divided by the frequency is 1.5 10 power 6. चेक करें. Sorry. 0.000866. 0.00. Say 3. How many zeros? मैं ऐसे लिखता हूँ 1 2 8.10 power. Describe one use of X-rays in medicine. Describe one use of X-rays in medicine. ये बोला. Sir, to show bones. Use of हाँ, very good. हम लिखते हैं X-ray are you X-rays are used to detect rays or use detect broken bones. Yeah, because bones absorb because bones absorb X-rays X-rays more than soft because bones absorb X-rays more than soft tissues and forms here No, sir. any confusion. No, sir.